नवीन, मेरे हिसाब से ये 5th ईयर हम दोनों साथ में आई थिंक बजट का एनालिसिस कर रहे हैं एक्चुअली. Right. So thanks for having you back. Good to have you. Yeah. On the budget, मेरे हिसाब से ग्रोथ बजट है क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर आई एम सेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए जो एलोकेशन जो रखा है एक्चुअली बजट पे almost about 30% increase over the last year number, which I can only call it as a capex. So that something clearly indicates ये तो growth budget है. Second is they were brought in focus urban infrastructure building, digital infrastructure building, and third is the renewable energy manufacturing के लिए जो allocation जो बनाया है, and fourth is around working closely with the state government and वो basis पे I think देश का growth बढ़ाने के लिए जो capital allocation जो रखा, I think if you look at from all angle, this budget is actually the growth budget. Second, this budget is not just only for 1 year. मेरे हिसाब से जो हिसाब से budget बनाया actually documents clearly ये 2-3 साल का budget है. So therefore it's a growth budget I can say. Okay. हमारे जो viewers हैं खास तौर से because many of them are also retail investors, their expectations may have been different कि कुछ ना कुछ direct incentive मिलेगा investments को boost करने के लिए, या तो कुछ ज्यादा पैसा हाथ में छोड़ा जाएगा, कुछ tweak किया जाएगा tax slabs में. So थोड़ा क्या वहां पर disappointment हो सकता है? नहीं, disappointment बोल नहीं सकता है क्योंकि ये उसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं अभी तो, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से डायरेक्ट टैक्स कोड और इनडायरेक्ट टैक्स कोड दोनों का इतना चेंजेस लेके आया एक्चुअली, स्पेशली इनकम टैक्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न वेरियस सेक्शंस मर्ज करके जो स्ट्रीमलाइन किया एक्चुअली. सेकंड इज जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स सब लोग भूल भी गया एक्चुअली. देयरफॉर ऑनगोइंग बेसिस में जीएसटी इज एक्चुअली गेट कवर्ड डिस्कस्ड. सो आज के में नंबर जो देखते हैं एक्चुअली 1,40,000 करोड़ का नंबर जो जीएसटी का नंबर जो आया कल के लिए, दे ऑल एक्चुअली द फंक्शन ऑफ जो गवर्नमेंट ने जो हर साल कुछ रिविजिट करके प्रोविजंस को रिविजिट करके टैक्स बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. That's something reflecting on GST collection. The same way direct tax के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं. I think last year also they did something for direct tax. मेरे हिसाब से इसमें disappointment होने के लिए कुछ कारण है ही नहीं है, क्योंकि there is nothing much to be done as far as direct tax concerned. Okay. So would you say कि हो सकता है कि अगले 1-2 साल जबकि elections थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे 2024 when the new government will need to be formed, then the government may have left something some leeway for that ताकि अभी कुछ जो है इकोनॉमी की हालत को दुरुस्त कर दे. Like you said, the capex has been enhanced by more than 1/3. So एक इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देकर इकोनॉमी को थर्स्ट दिया जाए, and then later maybe next year or next to next कुछ ना कुछ वहां पर एक इंसेंटिव दिया जाए ताकि थोड़ा सा याद भी रहे लोगों को closer to the elections. So ऐसा तो नहीं लगता है क्योंकि आजकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हिसाब से ये बजट बनना ही बंद कर दिया है, क्योंकि जो हिसाब से पेंडेमिक के बाद सोशल बेनिफिट करने के लिए इतना सब गवर्नमेंट ने किया है एक्चुअली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेके एंड रूरल पब्लिक के लिए जो इंसेंटिव दिया है एक्चुअली, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली नॉट बजट और नॉट टारगेटेड टुवर्ड्स इलेक्शन. दे आर ऑल टारगेटेड टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग द पीपल एट लार्ज फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन. And from a taxpayer point of view, I don't think from a middle class income class point of view or government employees point of view, I think a बार भी actually किया actually budget में, especially for NPS contribution के लिए जो differential treatment जो पहले था between central government employees और state government employees, अभी दोनों को actually equal कर दिया है budget में. Therefore, they are not targeting election is the reason they should create the budget. I think they are clearly making the budget rest with the election ये अपना देश के लिए क्या लेके जाना चाहिए, focusing on making India theme, focusing on digital India theme, focusing on making India more compliant with the ESG norms globally. I think मेरे हिसाब से जो बना रहे हैं actually without selfish approach ही कर रहे हैं मेरे हिसाब से. Okay, ये जो आपने एक बात कही है globally, I think that's a keyword. तो इससे क्या लगता है जो reforms की तरफ गवर्नमेंट का commitment दिख रहा है, will that attract more money from the overseas investors? So definitely I think India आज के दिन पे अगर देखते हैं इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के हिसाब से clearly among the emerging market India stands out very well, क्योंकि एक तो starting from political stability, continuous reforms are being carried out. Third is जो अपना देश को जो बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए
so that global investors can look at India as investment opportunity. हाँ, वो भी कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ काम कर रहा है आज के दिन पे. स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर जो आ रहा है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया आल्सो इज राइजिंग. अगर वो बेसिस में देखते हैं एंड आल्सो द चाइना के हिसाब से द वे चाइना इज स्लोइंग डाउन, इफ यू लुक एट फ्रॉम ऑल एंगल reformist oriented government in India, then there is a reverse gear in which I think China is doing, unwinding some of those challenges that they had. I think मेरे हिसाब से दोनों के मिलके देखते हैं, I think India would be one of the largest destination to get FDI investment. अब ऑफकोर्स सब में एक सवाल होएंगे सबका मन में, लास्ट ईयर FPI नेगेटिव था, does it mean actually continue to be negative? मेरे हिसाब से FPI negative is largely on the back of global interest rates going up, but nothing to do with the India not being attractive from their investment point of view. मेरे हिसाब से साइकिल में वापस I think investments बड़ा आ सकता है इंडिया में. एक तो ये है FDI की बात है. I mean, I was also looking at one of the tweets yesterday, जिसमें ये था कि इलॉन मस्क को अट्रैक्ट करने के लिए सभी गवर्नमेंट जो है कम्पीट कर रही है, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया कि एक हेल्दी कंपटीशन है. सो दैट्स वन पार्ट. द सेकंड पार्ट इज मनी फ्लोइंग इनटू द इक्विटी मार्केट्स थ्रू FIs. तो ये जो इंडियन डेस्टिनेशन है एज अ मार्केट, इमर्जिंग मार्केट लाइक वी से, तो यहाँ पर क्या ओवरसीज पैसा अब लग रहा है कि और आएगा बिकॉज गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, और आज भी हमने देखा मार्केट्स ने एक थम्स अप दिया. सो डज दैट रियली मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर FIs टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स? या डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो बजट के हिसाब से बनाया, आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड नॉट हैव एनी रीजन टू क्रिब. एंड किसको भी आई थिंक मेरे हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने मौका नहीं दिया एक्चुअली टू राइज द क्वेश्चन मार्क ऑन सम ऑफ देयर एक्शन एक्टिविटीज. जिस हिसाब से प्लान बना रहे हैं एक्चुअली नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, उसमें कोई सवाल नहीं पूछ सकता है. एंड आई थिंक देयर इज वेरी क्लियर कट मैसेज दैट्स बीन गिवन. अगर वो बेसिस में देखते हैं फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, they don't need to ask too many questions. They may only ask questions on 2-3 things. One, interest rate rising, agar globally agar hona shuru ho gaya, then what will happen to India? And then earnings yield kabhi gir jate hain when the bond yields go up and so on and so forth. I think ye mere hisab se ye sab sawal uthenge actually in foreign investors ka mind mein, rather than government ka jo budget ke hisab se जो कंसर्न जो राइज करना चाहिए मेरे हिसाब से FI का वो कंसर्न नहीं होगा मेरे हिसाब से. तो मतलब नैरेटिव जो है वो चेंज हो गया है. नैरेटिव सरकार की इंटेंट पर नहीं है, नैरेटिव जो है ग्लोबल फैक्टर्स, नैरेटिव जो है एग्जीक्यूशन, उन सब चीजों पर जाएगा, फोकस वहां पर होगा. ये जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई हैं खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए या फिर कुछ एक सेक्टर्स को अपलिफ्ट करने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कुछ सेक्टोरल फंड्स की तरफ, म्यूचुअल फंड्स में जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए? कौन से सेक्टर्स आपको आज के बजट के अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगते हैं? आपको 1-2 चीज ध्यान में रखना पड़ेगा. आज के दिन पे अगर इक्विटी का देखते हैं, लास्ट 2 साल से इक्विटी मार्केट हैज गिवन द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न. एंड अगर इन्वेस्टर्स के मन में होते हैं एक्चुअली दैट ऐसा जो रिटर्न जो 2 साल से दिए है और आने वाला समय में वो ऐसे रिटर्न दे सकता है, वो गलत हो जाएंगे. सेकंड इज बॉन्ड मार्केट जो वॉलेटिलिटी जो आज के दिन पे आ रहा है, बॉन्ड मार्केट यील्ड्स हैव गॉन अबाउट 675-680 एंड बॉन्ड यील्ड्स टू गो अप का उम्मीद भी ज्यादा है एक्चुअली आज के दिन पे. अगर वो बेसिस में देखते हैं एक्चुअली, देन बॉन्ड मार्केट अगर वॉलेटिल कभी हो जाते हैं, डेट मार्केट इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिल आ जाते हैं उसकी वजह से. Therefore, the way one should approach is more than sectoral fund. Clearly, they should take funds which are more flexible in selecting sectors, stocks, etc., which is flexi cap fund, maybe a large and mid cap kind of fund, because mid and small cap companies will continue to do well in the long run. मेरे हिसाब से ये दोनों में देखना चाहिए. In addition to that, कोई भी नया इन्वेस्टर्स है, उनको समझ में नहीं आएंगे एक्चुअली मार्केट में किधर सेलेक्ट करना है, किधर डालना है पैसा. That is why I think multi-asset allocation for an asset allocation fund I think is the key to the success. So उसमें उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कौन सा asset में डालना है, कौन सा इसमें निकालना है. As a money manager will continue to do depending upon which segment of the market they want to invest, whether it is the large cap, mid cap, or multi cap, or in the thematic funds such as banking and financial fund, digital India fund. I think मेरे हिसाब से money manager choose करके कौन सा structure अच्छा लगता है वो इसमें डालेंगे. The same way जो fixed income का view लेके जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी मल्टी एसेट के फंड में करेंगे. फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं इक्विटी अपना फोकस फंड का अलावा जो बोला एक्चुअली व्हिच इज दी 3-4 फंड्स के जो बात उसके बारे में बात किया था इन इक्विटी.
such as live equity fund, flexi cap fund, or maybe larger mid cap fund. In addition to that, balance advantage fund is something takes into account market fluctuations, and then finally asset allocation fund. ये चारों चीज में I think मेरे हिसाब से फोकस कर सकता है rather than chasing any single sector oriented funds. चलिए, ये तो आपने काफी सारे एक साथ जो टिप्स हैं, not in a very literal way but in a very directional way आपने बता दिया कि कहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, and that's something which is a good takeaway for investors who are watching our show today. एक आपने बॉन्ड्स और बॉन्ड डील्स की बात की, तो अक्सर कंपैरिजन जो है बिटवीन इक्विटी एंड बॉन्ड भी हो जाता है और डेट फंड्स भी हो जाता है, तो उन दोनों को अगर आप आज के एटमॉस्फेयर से, आज के बजट से, उसकी डायरेक्शन से देखें तो कैसे कंपेयर करेंगे? आई थिंक दो तीन चीजें देखना चाहिए. एक तो लास्ट 2 साल से मार्केट बढ़ने से एक तो बोल भी सकता है वैल्यूएशन आज के दिन में सस्ता नहीं है, मार्केट का वैल्यूएशन सस्ता नहीं बोल सकता है. सेकेंड इज आपको इंटरेस्ट रेट 4% में रहते हैं और वो 4% एक्चुअली इंटरेस्ट रेट 7% हो जाते हैं. रियली 4 to 7 का मेक्स ह्यूज डिफरेंस फ्रॉम रिटर्न एक्सपेक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू. earnings yield is what? Earnings yield nothing but the EPS divided by the stock price. अगर वो बेसिस में देखते हैं, clearly the earnings yield today would be the least, one of the lowest, and the bond yields का और earnings yield का दोनों I think फर्क ज्यादा होगा. Keeping that in mind, market always looks at these kind of parameters. But ये बेसिस में अगर एकदम मंदी समझ के इक्विटी में पैसा भी निकाल नहीं सकता है, क्योंकि इक्विटी इन द लॉन्ग रन गिव्स यू द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न. अगर बॉन्ड मार्केट एकदम यील्ड एकदम जोर से बढ़ जाते हैं, दैट इज द टाइम आई थिंक वन शुड वरी अबाउट इट. बट ये पैरामीटर्स आई थिंक ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली ऑन allocating your money towards equity and fixed income. But वही चिंता रिमूव करने के लिए I suggested about asset allocation fund is only keeping that in mind. कोई भी इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रख के कॉल लेना बहुत मुश्किल होगा. But the best way to play is on just themes to the asset allocation fund. Okay, so that's the key message here. अब एक और नई बात करते हैं. यहाँ पर आज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि डिजिटल रुपी भी आएगा in 2022 or 23. तो इसे आप कैसे देखते हैं? Is that going to be one of the new assets in the portfolio? या फिर आपको लगता है कि एक थोड़ा सा ग्लोबल जो डेवलपमेंट्स हैं उनसे अलाइन करने की एक कोशिश है? See, the digital को clearly I think India has been taking the lead in every manner. क्योंकि डिजिटल इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, actually came in handy for demonetization. डिमांड के बाद पैंडेमिक के टाइम पे अडॉप्टेशन इंडिया इज वेरी वेरी हाई. Now they are taking India to next level on digital. I think digital revolution में I think they are now taking the next level. मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का जो फोकस जो आया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, such as digital university, digital district, and then digital way of teaching people in rural India and using technology. I think fintech और digital में जितना फोकस आया is something making India to look different from rest of the global market on the digital economy. The same way जो गवर्नमेंट ने जो हिसाब से currency, digital currency under the RBI guideline में इश्यू करने के लिए आज जो अनाउंसमेंट किया है is also something that they are not recognizing like cryptocurrency kind of things. At the same time है सब लोग पैसा बना रहे हैं तो उसका टैक्स करा देते हैं, तो उनको टैक्स भी करा दिया, 30% का टैक्स भी करा दिया डिजिटल virtual assets में. So these are some of things in the direction of one, discouraging speculation, encouraging more orderly digital adaptation. And as I say, this will I think will be very helpful as the next 10 years of journey in the India and digital side. ये जो आप एक next 10 years की बात कर रहे हैं, आज थोड़ा सा इस बारे में भी डायरेक्शन मिलेगी जब इंडिया एज अ फ्री कंट्री 100 years का हो जाएगी, तो वहां पर एक थोड़ा डायरेक्शन देखने को मिली कि कैसा होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए. तो कई लोग करने के लिए, हालांकि 1 लाख के सेंसेक्स की जब बात करते थे पहले इम्पॉसिबल लगता था 10-12 हजार 15 हजार के लेवल पर, लेकिन आज जब हम ऑलमोस्ट मिडवे पहुंच चुके थे एक बार 40,000 के इंडेक्स पर, तो क्या लगता है वो नंबर्स थोड़े रियलिस्टिक लगने लगे हैं? और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो वो अचीवेबल है, इसलिए इक्विटीज जैसा आप कह रहे थे कि बेस्ट रहती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखें, तो is it time now to still consider equities or it may be a bit too late?
See, equity one should consider as long as your time horizon is longer. आप इक्विटी कभी भी 1 साल 2 साल के लिए देख नहीं सकते. You have to look at equity investing for 5 year 10 year period. So जो आपने जो बताया actually that nobody would have expected say 60,000 index or 50,000 index. Nobody would have expected that. Say maybe 6 years back, people would have a doubtful 50,000 index हो सकता नहीं हो सकता है. Very fact that it has come. Even 1 lakh crore index also, 1 lakh index also is quite possible next 4-5 years time frame. But equity market में एक ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा that market in short term will always be fluctuating, but in the longer term gives a return क्योंकि the power of compounding comes in actually equity market. दूसरा actually ये budget में very interestingly the finance minister talked about preparing India for 100-year independence celebration. Right. Some of them may be there, may not be there. The fact of the matter is preparing India for next 25 years celebration के लिए वो basis पे जो plus also the next gen which is coming in वो basis पे जो urban infrastructure development के लिए जो documents बनाया mention किया है budget में, clearly I think making every state government to realize they need to create many cities, many districts which will become like a more urban. ऐसा नहीं है that you have to move from rural to urban, but the rural India or semi-urban India itself can become urban cities by way of creating all the facilities that normally exist in the urban cities. Therefore, you will find more urban cities in the country. So that's something जो government ने ये budget में जो focus करके उसका mention किया है. This is something drawing the roadmap for the future. तो ये मतलब जैसे उन्होंने कहा कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी जो है वो फिर अर्बन एरिया में हो जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही. जैसा आप कह रहे हैं कि जो सेमी अर्बन एरियाज हैं उन्हें ही अर्बन एरिया बना दिया जाएगा. जो डेवलपमेंट हो रही है वो उस डायरेक्शन में चल रही है. हम देख रहे हैं कि हाईवेज पर काफी काम हो रहा है, कनेक्टिविटी पर काफी काम हो रहा है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए शायद हमारे कंट्री का एक अपलिफ्टमेंट भी है. तो ऐसे में अगर हम अपॉर्चुनिटी को देखें, खासतौर से मार्केट्स के तौर पर जो लोग देखते हैं, कंसिडर करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी आप कहेंगे कि इंडिया में ही सबसे ज्यादा है. ओवरसीज से जो पैसा है एक तो यहाँ आता है, दूसरा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी ओवरसीज फंड्स में अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की. तो वो जो मिक्स है अभी इंडियन इक्विटीज प्लस इंटरनेशनल इक्विटीज, उसको आप कैसे बदलते हुए देखते हैं? सिर्फ 2-3 चीजें एक्चुअली. एक तो इंडियन इक्विटी विल रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इक्विटी, क्योंकि अगर ग्रोथ अगर इंडिया में आने वाला है, क्लियरली आई थिंक इंडियन इक्विटी विल रिमेन वन ऑफ द अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन. अगर ग्लोबल के लिए इंडियन इक्विटी अच्छा लगता है, इंडियन के लिए क्यों नहीं अच्छा लगेगा? सो दैट इज वे टू आई थिंक लुक एट इट फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. और दूसरा एक एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने बनाया एक्चुअली द फंजिबल इन्वेस्टमेंट, जो हिसाब से ग्लोबल इन्वेस्टर लुकिंग एट इंडिया, इवन आज के दिन पे यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन ओवरसीज मार्केट, स्पेशली फॉर फ्यूचर कीपिंग इन माइंड डॉलर इन्वेस्टिंग. अगर आज के दिन पे डॉलर अगर कंटिन्यू टू डिप्रिशिएट बाय 3-4% एवरी ईयर, पर उसका हेज करने के लिए अगर आपको डॉलर इन्वेस्टमेंट आज के दिन पे लेना है ओवरसीज, 10 साल के बाद आपके किड्स का एजुकेशन के लिए काम पे आएंगे, तो उसके लिए भी जो व्हीकल जो बनाया एक्चुअली दैट आज प्लस म्यूचुअल फंड रनिंग सम व्हीकल्स, आप नैस्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया. So such kind of product will definitely help you creating some dollar-based assets. See, overseas का इन्वेस्ट करने से आपको एक dollar-based asset मिल जाते हैं. Dollar-based assets में 2 फायदा हो जाते हैं. एक तो डॉलर डिप्रिसिएशन अगर होएंगे उसके फायदा मिल जाते हैं, और दूसरा एक एक्चुअली दैट ग्लोबल कंपनीज हु आर ऑपरेटिंग द ग्लोबल स्पेस, not just only in India. There are many companies like Google, they invest not only in India, the worldwide they provide service. उसका कहीं हम फायदा उठा सकता है by investing in overseas market. Therefore उसमें भी overseas investment abroad can be considered. उसमें खाली एक ही है which normally I tell people, overseas investment करने के पहले you must consider all your investment avenues within India. Okay. So most of the people बाहर पैसा डाल देते हैं, इंडिया में कुछ पैसा नहीं डालते हैं. Suddenly they realize अगर इंडिया में डाला होता I would have made more money. So avoid such kind of confusion. मेरे हिसाब से अपना देश में पैसा निवेश करने के बाद जो बचा हुआ actually as part of the diversification, we can look at overseas investment. Okay, that's also a good strategy for people who want to understand as first time investors, ताकि यहाँ पर थोड़ा उनको जो ईज है, और खासतौर से अब तो डिजिटल सब कुछ हो गया है, तो आपका केवाईसी भी डिजिटली हो रहा है, और एक आप कम से कम प्रोसेस को समझ लेंगे, फिर उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट्स को भी समझने लगेंगे, एंड देन यू कैन मेबी वेंचर आउट एंड देन experience some sort of hedging like Bala was saying,
या फिर अगर आप थोड़ा सा गेन्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्रिस्टल बॉल गेजिंग अगर हम करें, ऑल्दो दैट मे बी अ वेरी डिफिकल्ट वन, बट नेक्स्ट बजट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट बजट, क्या आपको लगता है वेयर वुड वी बी? मेरे हिसाब से जो बजट गेटिंग प्रिपेयर्ड लास्ट 4-5 साल से, जो बजट का पहले एक्साइटमेंट जो पहले होता था, तो अभी बजट का एक्साइटमेंट नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली फ्यू एरियाज। पहले हम लोग बजट होने के बाद पूरा मिडनाइट तक बैठ के वी यूज्ड टू मेक एन एनालिसिस, कौन सा सेक्टर में इम्पैक्ट आ सकता है, कौन सा सेक्टर बेचना है, कौन सा सेक्टर खरीदना है। अभी वो सब डिस्कशन कम होता है एक्चुअली, क्योंकि जीएसटी आने के बाद वो पूरा का पूरा निकाल दिया। Therefore now budget over a period of time will be one of the direction from the investment point of view. So and that will again keep changing it. So depending upon which situation we as a country are in, agar growth nahi aaya, then they may have to take more calls on making more investment. Agar growth aa gayi hai, then tax collection aa gayi hai, then they'll probably give more incentive to the people by way of tax cut. So I think we'll go in that kind of cycle. So मेरे हिसाब से next 2 years, if you have to see, this year is full of election year. 5 elections are there. I think 24 is the general election will come. So keeping this in mind, मेरे हिसाब से will always remain as a growth oriented budget even आने वाला समय में भी। एक और चीज अगर हम थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें, जो डायरेक्शन है या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटी और दूसरे जो एसेट्स हैं, उनको अगर हम पोर्टफोलियो में एक रीबैलेंस करने की कोशिश करें, तो अभी भी क्या इक्विटी सबसे स्ट्रांग दिखते हैं, या फिर क्योंकि जैसे एक पीएम आवास योजना है उसमें और हाउसिंग पर जोर है, या फिर हम देख रहे हैं कि कुछ ज्वेलरी सेगमेंट के लिए इंसेंटिव्स हैं, तो क्या गोल्ड और दूसरे एसेट्स वो कुछ फोकस में आ सकते हैं? तो ये जो बैलेंस है, क्या कुछ चेंज होता है आज के बजट के बाद, आपको दिखता है? ऐसा नहीं दिखता एक्चुअली, क्योंकि देयर इज नो स्पेसिफिक इंसेंटिव जो दिया हुआ एक्चुअली, वो बेसिस पे वो सेक्टर को बहुत फायदा हो सकता है। द कंट्री अगर ग्रोथ अगर आ गई है, मेरे हिसाब से पूरा देश का हर सेक्टर को फायदा हो सकता है। वो एक है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो बनाया एक्चुअली ग्रोथ बजट, उसमें स्टील, सीमेंट, द बेसिक मटेरियल जो बोलते हैं, उसका भी फायदा हो सकता है। देयरफॉर फ्रॉम मनी मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो सेक्टर्स पोर्टफोलियो में कोई भी पोर्टफोलियो ओन कर सकता है। So therefore all such ideas will get captured in the existing scheme itself. So उसका हिसाब से जाके देने की जरूरत नहीं है। See, gold and silver as an asset class, I think both asset classes will remain. Silver is industrial asset class, क्योंकि अगर industrial activities बढ़ी है, then silver actually one material will have a huge demand. So इसके हिसाब से price बढ़ सकता है। Gold is something is a more safe asset class. ये दोनों आपको investors का portfolio में say 5 to 10% kind of portfolio consider कर सकता है, irrespective of whatever the return that you will get. See, ultimately, मेरे हिसाब से mutual fund investment will move towards asset allocation model rather than single sector or single stock or single segment of the market. Okay. So lastly, what's your one advice to the investors who are watching this show? कि अब अगर फेंस पर बैठे थे या फिर सोच रहे थे, मार्केट्स को थोड़ा सा देख रहे थे, क्योंकि बीच में कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसा लगता है, बट एज वी कीप सेइंग कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, सो एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं। बट ओवरऑल, इफ यू वर टू गिव अ मैसेज टू द इन्वेस्टर्स, व्हाट वुड दैट बी? सी, इन्वेस्टर्स का मैसेज क्लियरली, एक तो आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा irrespective of what the market condition is. तभी आपको वेल्थ बनते हैं when you keep investing. And if you try to time the market, there's high probability you will postpone your decision. In a falling market, you will postpone your decision, और market गिरने दें. In a rising market, again you will postpone your decision, saying market गिरने दें, उसके बाद पैसे डालते हैं. So that is why most of the people take a decision. Therefore, my one advice is don't delay your investment. डाल दो आपने, but not necessarily you have to put all your money in equity. Today, balance advantage fund kind of schemes are there. That will be actually good onboarding schemes. And then as and when you want to do into equity investment by your STP, the rupee cost averaging जो SAP में जो मिलते हैं और STP में मिलते हैं, the systematic transfer plan. So I think वो basis में I think investors को invest कर सकता है. Anything that you decide to wait, and believe me, you will always think that you are taking the right decision or waiting. When the market turns continuously bullish, I think you will probably start feeling the fear of missing out. वो आ जाएगा.
So fear of missing out avoid करने के लिए you must keep investing in the scheme that has got least risk at this point of time, and asset allocation के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए. And third is STP के हिसाब से आपको इक्विटी में पैसा डालना चाहिए. Okay, so I'm sure some of people may already have been feeling कि उन्होंने they have already missed the bus. वो जो fear of missing out होता है, that feeling may already be there, क्योंकि आज markets में अच्छा reaction देखने को मिला, और अगर हम पिछले 1-1.5 साल में देखें तो काफी अच्छा रिटर्न भी मिला है. बट जैसे बाला कह रहे थे, यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू डोंट हैव टू थिंक के पहले जो रिटर्न मिला वो नियर टर्म में दोबारा से मिलेगा या रिपीट होगा. तो इसीलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे तो फिर आप इक्विटीज से फायदा उठा ही सकते हैं. बट थैंक यू सो मच बाला फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड डिकोडिंग द बजट फॉर अस. हालांकि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ आया नहीं बजट में, लेकिन जब हम ऐसी बातचीत को सुनते हैं तो वहां से हमें क्यूज जरूर मिलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. जैसे आपको कुछ एक कैटेगरीज के बारे में बाला ने बता दिया कि ये कैटेगरीज पर आपको ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ से आप क्यों लीजिए. बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे बाला. Yeah, thank you Naveen, and hope it was helpful for everyone. Absolutely, I think कुछ ना कुछ टेक अवेज जो हैं वो जरूर हैं, और ये टेक अवेज ही हमारी कोशिश रहती है कि म्यूचुअल फंड टॉक में हम आपको दें, ताकि सिर्फ बातचीत नहीं सुने आप, वहां से एक्चुअल आपको एक्शन क्या लेना है जिससे कि आपका फायदा हो सके, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकें, अपने फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकें. यही हमारी कोशिश रहती है. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस स्पेशल एडिशन ऑन बजट. We'll wind this up here. This is Naveen Soni, your host, saying goodbye. Thank you so much for watching. Thank you, Naveen.